Poonamji, you can start the session. Good evening, everyone. CASA has launched a crash course on Ind AS covering all major topics that is beneficial for profiles like audits, financial reportings, financial analysts, and for all the members in practice too. Today's session is on overview of Ind AS and covering Ind AS 1 and Ind AS 10. Our eminent speakers for the day are Dr. C.A. Alok Kumar Garg and C.A. Chandni Gupta ji. Elaborating you a little into Alok ji's profile. He is an eminent expert in Ind AS and an eminent speaker. He is CA, CS, diploma holder in IFRS from ACCA London, certified Ind AS from ICAI. He is an author of 4 books on accounting standards. Recently, he has authored a comprehensive book on Ind AS, treatise on Ind AS explained with practical examples and MCQs. He has delivered more than 650 lectures, including overseas in Dubai and Nepal. He is also awarded with National Education Leadership Award from DU in association with Indian Accounting Association. Going endless with n number of seminars and awards associated with Alok ji. Now I hand over the space to him to start upon the lecture space. Poonamji, before starting of the Alokji, I would like to welcome Alokji, my good friend, and Chandni ji, upcoming speaker in the field of financial reporting, and each members who are joining this Ind AS course. Friends, just I would like to tell you, we are organizing these Ind AS since the starting the journey of this Ind AS on the basis physically. But now in the COVID time, in the last 2 years, we have organized many courses on this Ind AS virtually on the Zoom platform, in which in every course, Alokji has given your precious time. So thank you, Alokji, for giving precious time for analyzing the Ind AS thoroughly. And also Chandni ji is also supporting now in the field of Ind AS when she has started. Friends, as we all know, it is helpful for all corporate members who are finalizing their accounts as per Ind AS, not only for the financial guys who are working industry, as well as for the auditors who can understand the difference between Ind AS and IGAP, so that we can analyze the financial reporting and do the audit properly. So definitely we will learn so many things in the next 6 days, and today's session is going to start by none other than CA Dr. Alok Garg, who is we can say he is master blaster in the field of financial reporting. So a warm welcome to Alok Bhai and Chandni ji for today's session, and each participant for joining and showing the faith on this team CASA. So now I request Alok ji to take up the opening session. Thank you, Sumit Bhai. Thank you for the opportunity and your kind words. Thank you, Poonam ji, for the nice introduction. And I can say that, taking a session with CASA is like, playing on home ground. Right. So CASA hamesha home ground raha hai, and it's not like that we are talking about Ind AS in 2022. So I still remember the days when these Ind AS got notified some way back in 2015 and 2016. So we did so many programs on Ind AS, and of course, these programs are launched by Sumit Bhai. And Sumit Bhai has always contributed in this particular field by way of organizing these kind of seminars and webinars. And of course, Sumit Bhai, you are doing a great job, because income tax, GST, budget sessions, okay, so forensic, so everybody is doing that. Even you are also doing that. You are also arranging seminar on these areas. But I have seen you that every year you are just, organizing 3-4 seminars on Ind AS. So I think that's a wonderful thing, because it is an area where professionals are not much focused about that, right? And I can say that books of accounts are one of the basic thing on which the taxation is depends upon, right? So अगर assessing officer के पास हम जाते हैं, या let's say किसी भी authority के पास जाते हैं, I think the first thing is books of accounts on which he or that authority is relying upon.
And if I talk about books of accounts, so books of accounts कैसे बनती है, तो of course books of accounts बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो that is accounting standard. I'm not talking about Ind AS to be particular, it's accounting standard. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब बात आती है तो हिंदुस्तान में देयर आर 3 काइंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो ऑफ कोर्स वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं. When I'm saying 3 kind of course there are 2 kind of AS. One is AS for non-corporate entity and the second one is AS for corporate entity, right? And the third one is AS. So of course जो non-corporate entity है उसको level 1, level 2, level 3, level 4 4 levels में divide किया गया है. एंड इन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ एग्जेम्पशन, कुछ रियायत दी गई है. सो देयर आर सम एग्जेम्पशंस इन दोस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी एप्लीकेबल फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जो कि फर्दर बोरिंग्स कितनी है या उसका टर्नओवर कितना है ये लेवल उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं. द सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच इज एप्लीकेबल इन द टोटो दैट इज फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज. सो जिन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे इंड एएस नहीं लगता उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, राइट? और ये सारे के सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कहाँ पे डिफाइंड है? सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 में व्हिच हैज बीन अमेंडेड विद 2021. सो उसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं और कंपनीज इंड एएस रूल्स 2015 अमेंडेड विद 16, 17, 18, 19, 20, 21 उसमें आपके इंड एएस दिए गए हैं. सो जिन कंपनीज पे इंड एएस नहीं लगता उन कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं और कंप्लीटली लगते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंडर्ड which is Ind AS. So today we are going to talk about Ind AS. So before talking about Ind AS, of course it's a 6-day series. 6 sessions will be conducted by different eminent speakers, and today my fellow speaker will be CA Chandni Gupta, and she will take you through with the maiden Ind AS, which is Ind AS 1, very important Ind AS, and Ind AS 10. So she will take you through what is Ind AS 1. So how these financial statements are going to be presented. So she will talk about the format in terms of कि balance sheet में क्या होता है, P&L में क्या होता है. So Ind AS 1 की क्या requirement है, and she will talk about what are the events which are required to be disclosed post balance sheet. And of course, being the first session, of course I'll talk about why Ind AS. So after 40-45 minutes you will start learning Ind AS, but why? So this why will be answered by me. So why Ind AS? Okay. So where Ind AS? So of course that will be answered by me. And of course how these Ind AS have been drafted, and so what was the logic for applying this Ind AS in Indian scenario, right? Please confirm if my screen is visible. Yes, bhai. Yeah. So of course today we are talking about Ind AS, and while talking about Ind AS, of course we will be talking about why Ind AS. Okay. So what Ind AS, why Ind AS, and where Ind AS? So I think we will talk about these 3 questions. And after these 3 questions, so Chandni will take you through with Ind AS 1 and Ind AS 10, right? Yeah. So I hope agenda is clear to everyone. I hope so. Agenda is clear to everyone. Yeah. So let me look at the chat box. Yeah, great. So let's move on, because sometimes what happens, the agenda is not clear to everyone. So after 2 hours, somebody just wondering what is going on. Okay. So I think we need to first understand that what is going on, and of course what is the agenda for the day. So let me talk about overview of Ind AS and roadmap for implementation. First of all, we do have our accounting standards, right? If we do have our accounting standards, then what was the need for Ind AS, right? So way back in 2015, and although I'll not talk about only 2015, I'll talk about 2007, right? So we do have our own accounting standard, and in terms of number, these accounting standard are 27 accounting standard, right? But if I talk about the global scenario, globally, there are around 200 countries, right? I'm not talking about Russia and Ukraine. I know that there is a hard pressing environment which is going on between these 2 countries. So I'm not interested in talking about these 2 countries, but of course, I'm talking about the global reporting, right? I'm talking about the global scenario of accounting and reporting. When we talk about the global scenario of accounting and reporting, so of course, out of these 200 countries, there are more than 50 gaps, which is prevalent across the world, right? For example, if you move to Europe, so in Europe, there was, there was UK gap, French gap, German gap, okay.
Chinese gap is there. For example, in China, in Pakistan, there is a Pakistani gap. In Bhutan, there is Bhutanese financial reporting standards. So in US, it is US gap. In India, it was Indian gap. It is Indian gap in India. So there are more than 50 ways of accounting and reporting across the globe. Okay. So if I am sitting in, let's say, India, and I want to understand the financial statement of Singapore. So of course, in Singapore financial reporting standards are applicable. In Malaysia, MFRS, Malaysian financial reporting standards are applicable. Okay. In Hong Kong gap is applicable. In Japan, Japanese gap is applicable. So today's economy is not restricted or limited to a particular country. So today's economy is an open economy, and it is related with the entire world. For example, I was working with HSBC. Prior to Bharti, I was part of HSBC. So when I was part of HSBC was a bank which is operating into, let's say, 75 countries across the world, more than 75 countries. And this is the bank which is operating into 5 different, of course, 5 different continents. And this bank is listed into 5 stock exchanges, like Paris Stock Exchange, London Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Bermuda Stock Exchange, and US Stock Exchange. So this bank is listed into 5 stock exchange. This bank is operating into more than 75 countries. This bank has a legacy of more than 150 years. And I was into the reporting vertical of this particular bank, where I need to, take the financial statement of different countries, and I have to get the consolidation done for these kind of branches, or these kind of banks, or let's say subsidiary, joint venture, and associate, which were operating in those countries, right? Now the question arises, if different gaps are there. So for the purpose of Paris Stock Exchange, I have to report into French gap. For the purpose of Bermuda Stock Exchange, I have to report into Bermuda's gap. Okay. For the purpose of US gap is there. For the purpose of London, of course, IFRS or UK gap is there, right? For the purpose of Hong Kong gap is there. See, for these 5 different stock exchanges, I need to prepare the 5 different financial statement, which has to be into the 5 different languages, right? Now the question arises that if somebody has to invest in a company which is located into other country, or somebody has to get listed into different stock exchanges, so do we need to understand the different reporting language? Of course, it will be very cumbersome, right? And it will not be a right solution. Then what could be the right solution? For example, if I am a person who is traveling across the globe, so what do you think? If I am a person who wants to travel across the globe, what do you think? I need to learn every languages? I think that is a next to impossible task, because apart from learning languages, there are a lot of works to do. There are a lot of tasks to do. Okay, you cannot spend your time only in learning languages. So then what could be the solution? Then I think, and I say that, okay, if I know English, I think that will be okay for me, right? So English is a global language. English is an internationally accepted language, right? So likewise, if we do have some, common reporting language, which is applicable across the globe, and every country wants to apply that, I think that would be the right solution. And in the right direction, there will be uniformity in the accounting and reporting as well. Okay. Now the question arises, if a country like India, why India will follow Chinese gap? Or let's say a country like China, why China will follow, let's say, Japanese gap? A country like Singapore, why Singapore will follow French gap, right? And if I talk about in a very layman sense and in a very layman language, let's say there are 50 gaps, and if I just start reading these gaps, just name of these gaps: French gap, UK gap, US gap, Indian gap, Chinese gap, Hong Kong gap, okay, HKFRS, Malaysian financial reporting standard. What is common in these words? What is common? I'm only talking about the common word in these 2 words. So one of the participant is saying your voice is not audible. So guys, I hope I'm audible to everyone. Yes, Alokji, you're quite audible. Okay, so I hope I'm clear and loud. Yeah, great. Yes. So guys, what is common in these words, which I have told you just now? Atul is saying gap. Okay, what about others? What about others? Sumit is also saying gap. Okay.
Yeah. So guys, you are saying gap. Okay, so Gurpreet, my question was, I have told you the name of different gaps like UK gap, US gap, French gap, okay, Portuguese gap, Japanese gap, Hong Kong gap, Malaysian financial reporting standards, okay, let's say HKFRS, Bhutanese gap, Pakistani gap, Bangladeshi gap, okay. So I have told you the name of different gaps, and my question was, what is the common in all these words? So Shruti and others are saying gap, and Gurpreet is also saying gap. And let me congratulate everyone that I'm getting this answer since last 6-7 years. My question has not been changed, and even answer has not been changed. So it doesn't matter whatever the forum will be, but of course the question and answer remains same, right? Sumit bhai, what will be your Yes, answer? yes, I have noted this thing. Always. Yeah, so this is kind of an icebreaker. So let me tell you, the gap is not the common word here. So just you all are chartered accountant or finance professional. So just go by the concept substance over form. Okay, as a form, yes, you all are right. So gap is a common word. But going by the substance in accounting, substance lies over form, right? Going by the substance, if you see these words, so the prefix is common. And what is the prefix? Prefix is name of the country. Prefix is the name of the country, right? I'm just talking about the simple English, that in English these two words are there, and in every words what is common? The common is prefix, which is name of the country. Are you agree with me? So it means every gap is a country specific gap, every gap is a jurisdiction specific gap, every gap is a territory specific gap. Okay, so why a country will follow a different gap which is issued by a different country? Why India will say that my financial statement have been prepared as per Chinese gap? Okay, why? So no one will do that. Okay, so in that case, if there would be an accounting standard or a gap which is non-biased, non-country specific, which does not carry the name of any country in its in its name or in its title, so of course the things will get resolved. Then what could be such kind of a gap? What could be such kind of standard which is global, which is international, and where no any name of the country or continent have been marked as a prefix? Anyone who wants to have a try? Do you know any such kind of gap, any such kind of accounting standard? Sumit is saying IFRS. What about others? Yes, Lavnees is also saying IFRS. Right. Yes, you all are right. If you see the full form of IFRS, it is International Financial Reporting Standard. It is IFRS is International Financial Reporting Standard. You're right, Gurpreet, Rishabh, Dipali. Yes. So IFRS is International Financial Reporting Standard. And these International Financial Reporting Standard have been issued by International Accounting Standard Board in 1973, right? In 1973. And these IFRS are non-country specific, non-territory specific, non-jurisdiction specific gaps, okay, which can be accepted by any country who wants to adopt this kind of standard. And let me tell you, if I talk about Middle East, and probably if I talk about Dubai, so just 3-4 years back, Dubai does not have its own Dubai does not have its own accounting standard, and now Dubai has adopted IFRS. If you see the balance sheet of Emirates, you will find this balance sheet of Emirates have been prepared by IFRS. If you see the balance sheet of DuPont, so you will find that their balance sheet has been prepared by IFRS, right? So friends, if I talk about African countries, so a lot of African countries have do not have their own accounting standards because they do not have such kind of skill set or such kind of accounting bodies way back in 1970s, 80. Okay, so this when this IFRS came into picture, of course, many countries have started using IFRS, okay, as a ready-made gap which is given to them, right? So as of now, out of 200 countries, more than 140 countries are using IFRS by way of either adoption or convergence, right? So even India is using IFRS. So how India is using IFRS? India is using IFRS by way of convergence, right? So 150 countries are using IFRS, and one of the biggest continent, Europe, has adopted IFRS as it is. Okay, Middle East has adopted IFRS, right? New Zealand has adopted IFRS. Pakistan has adopted IFRS.
Malaysia, Singapore, Bhutan, India, these have converged IFRS, right? So what is the difference between adoption and convergence? So adoption means taking or implementing IFRS as it is. What is meant by convergence? Convergence means doing some changes in the literature. हमने क्या किया, IFRS का literature देखा और IFRS के literature में कुछ हमने बदलाव किया, कुछ changes किए. तो जैसे हमने changes किया, so मैं उसको IFRS नहीं बोल सकता. The moment I am doing some changes in IFRS, I cannot call that literature as a IFRS. तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं उसको कुछ और बोलूंगा. जैसे मलेशिया ने चेंजेस करे तो मलेशिया ने बोला MFRS, सिंगापुर ने चेंजेस करे, सिंगापुर ने बोला SGFRS, भूटान ने चेंजेस करे, भूटान ने बोला BFRS. ओके, सो वैसे इंडिया ने चेंजेस किए तो इंडिया ने बोला Ind AS, बिकॉज इंडिया IFRS नहीं बोल सकता था. IFRS is a copyright acronym. IFRS is a copyright of International Accounting Standard Board. We cannot call it as IFRS, so that is why we called it as a Ind AS, Indian Accounting Standard. Okay, and the earlier literature was called like Accounting Standard, right? So आज की डेट में कितने IFRS हैं आज की डेट में, और ये IFRS कब स्टार्ट हुए थे? So IASB ने लंदन में बैठकर IFRS बनाने शुरू किए थे. Although earlier they have a headquarter in Delaware, United States of America, but after some time their headquarter had shifted from USA to London. So now the headquarter is in the Canary Wharf, London. Okay, so IASB ने सबसे पहले IAS के नाम से स्टैंडर्ड बनाने शुरू किए, और 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो पहला स्टैंडर्ड इशू किया था, दैट वाज IAS 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दैट वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड which had been issued by IASB in 1973, right? So friends, 1973 में इन्होंने जितने भी स्टैंडर्ड इशू करने स्टार्ट किए वो किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम पे, IAS के नाम पे. तब तक IFRS नाम की कोई चिड़िया नहीं होती थी. Nothing call it as a IFRS till that time. Okay, so 1973 से 2001 तक इन्होंने क्या किया, 1973 से 2001 तक इन्होंने टोटल 41 IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए. 41, लेट मी टेल यू 41, और हमारे यहाँ पे कितने, देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, बट हमारे पास एग्रीकल्चर पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है आज की डेट में. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देयर इज नो स्टैंडर्ड, बट इन IFRS देयर वाज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS व्हिच इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41, जो की बात करता है एग्रीकल्चर अकाउंटिंग कैसे होगी. ओके, इफ अ कंपनी व्हिच इज एंगेज्ड इनटू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल एसेट, फॉर एग्जांपल फिश फार्मिंग, ओके, फॉर एग्जांपल केटल फार्मिंग, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो IAS 41 में गाइडेंस दिया हुआ है, बट हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई नहीं था. ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशनरी है, हमारे पास आज की डेट में कोई स्टैंडर्ड नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, बट IFRS में उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी इशू किया विच इज IAS 29, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, विच टॉक्स अबाउट अगर वेनेजुएला में आपकी कंपनी है, घाना में आपकी कंपनी है, जिम्बाब्वे में आपकी कंपनी है जिसकी इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशनरी है, तो उस जगह पे अकाउंटिंग कैसे होगी. सो जस्ट सी द थॉट प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. देयर थॉट प्रोसेस वाज नॉट लिमिटेड टू यूरोप, देयर थॉट प्रोसेस वाज नॉट लिमिटेड टू अमेरिकाज, their thought process was not related to or not restricted to the developed economy. Their thought process was related to developed economy, developing economy, okay, and the economy which has been developing or underdeveloped economy, right? So their thought process is to cater these entire set of economies, and these economies if want to apply these standards, they can apply these standards because these standards are non-biased, non-country specific standards. तो 1973 से 2001 तक 41 IAS इशू करे. 3 डिकेड के बाद, so of course 73 to 2001 almost 27-28 years. So after 3 decade ये जितने भी स्टैंडर्ड सेटर्स थे, जो बॉडी थी, कमिटी थी, उसने रियलाइज किया कि 3 डिकेड हो गए हैं और अब जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है बिटवीन द वर्ल्ड वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम. और आज की डेट में जो स्कैम्स वगैरह होने स्टार्ट हो गए एंड यू नो these reporter of the financial statements are manipulating the financial statement. तो उन्होंने बोला कि भाई साहब अब इसको अकाउंटिंग से शिफ्ट करके रिपोर्टिंग तक ले जाने की जरूरत है. So we need to look at our old accounting standard, old IAS. और इन्होंने बोला इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नाम बदलकर IFRS कर देते हैं, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ, IASB ने 2001 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिव्यू करना स्टार्ट किया और 41 IAS के बदले
उन्होंने 17 IAS उड़ा दिए, 17 IAS दे हैव डिलीटेड। तो उसका क्या किया फिर? और उसके बदले उन्होंने नए IFRS इशू कर डाले। 17 IAS के बदले उन्होंने 16 IFRS इशू कर डाले। ओके, सो आज की डेट में somebody will ask you about the literature of IFRS, it consists of 24 international accounting standard which has not been superseded by IASP. Okay, वो अभी भी हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। Okay, and there are 16 IFRS which have been issued by IASP post 2001, right? 2001 के बाद 16 IFRS आ गए और 2001 से पहले के 24 IAS हैं जो आज भी जिंदा हैं, जो आज भी हैं। तो इन टोटल हमारे पास 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। 40 का मतलब 24 है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 16 है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये हैं। इसके अलावा कुछ इंटरप्रिटेशन हैं, जैसे हमारे क्यूरिकुलम में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन हुआ करती थी, वैसे यहाँ पर भी कुछ इंटरप्रिटेशन हैं जिनका नाम दिया गया स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटीज इंटरप्रिटेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटीज इंटरप्रिटेशन। तो करीब करीब 20 इंटरप्रिटेशन है। 24 पुराने स्टैंडर्ड हैं विच इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज इफेक्टिव एज ऑन डेट ऑल्सो, एंड 16 IFRS हैं जो 2001 के बाद इशू हुए थे और आज इफेक्टिव है, राइट? या So of course I have told you that we have adopted IFRS, we have converged IFRS, we have not adopted IFRS. Europe has adopted IFRS. आप अगर HSBC के financials देखोगे तो उसमें लिखा होता है the financial statement of HSBC Bank PLC has been prepared as per international financial reporting standard which is issued by International Accounting Standard Board and as adopted by European Union and European Financial Reporting Advisory Group, राइट? तो यूरोप ने IFRS अडॉप्ट किया है। हमने क्या किया, उस IFRS में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करे हैं। हमारा जो इंड एएस है वो 99% कट कॉपी पेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पर 1% का हमने बदलाव करा है। तो हमने क्या बदलाव करा और उस बदलाव को हमने उसके 3 नाम दिए। एक तो कार्व आउट। व्हाट इज मींट बाय कार्व आउट? कार्व आउट का मतलब होता है IFRS में किसी एक आइटम को लेकर ट्रीटमेंट कुछ और है, हमने उसका ट्रीटमेंट कुछ और रखा। So we have changed the treatment from IFRS, right? So that is known as a carve out. For example, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा, 100 रुपए परचेज कंसिडरेशन था और 120 रुपए नेट एसेट्स की वैल्यू है, तो 20 रुपए का क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है 20 रुपए का? If purchase consideration is 100 rupees and 120 rupees is the value of net assets, so what is the accounting treatment in AS 14? Mr. Lavnish is saying capital reserve. Yes, you are right, Mr. Lavnish. It is capital reserve. But IFRS में जो IFRS 3 है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, वो ये बोलता है कि ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है ये कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएंगे. It will be nomenclated as a gain on bargain purchase और ये P&L में जाएगा. Right? Now we have debated with them. We have told you this is not a operational profit. This is a capital nature of profit. अगर कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो उसको मैं P&L में लाकर उसको फिर उसका डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? I cannot use this money as a distributable reserve, right? This is not in the ordinary course of business. This is not a revenue profit. This is a capital profit. Okay, मेरा काम नहीं है कि मैं कंपनियां खरीदता हूँ और कैपिटल रिजर्व लेके आता हूँ. And this could lead a nexus in the financial statement as well. तो हमने बोला कि हमारा जो पुराना ट्रीटमेंट AS 14 का चल रहा है, we are happy with this treatment and we will not implement this P&L वाला thing, and hence we continue with the such item to be gone to the capital reserve, to go into the reserve. Okay, and hence since we have taken a different treatment, we call it as a carve out. सर कितने carve out हैं? टोटल 8-9 carve out हैं, राइट? बहुत ज्यादा carve out नहीं है. दूसरा आया कार्विन. कार्विन में क्या हुआ कि हमने बोला कि अगर एक ग्रुप कंपनी है, फॉर एग्जांपल A लिमिटेड जो है वो पेरेंट है और B और C उसकी सब्सिडरी है, राइट? तो हमने बोला कि B ने अगर C को अक्वायर कर दिया, तो अक्वायर करने से पहले B का पेरेंट कौन था? A ही था ना. और अक्वायर करने के बाद पेरेंट कौन है? तब भी A है. तो इसका मतलब बिफोर और आफ्टर द कंट्रोल इज कॉमन, राइट? तो हमने बोला कि अगर कोई कॉमन कंट्रोल है, ग्रुप एंटिटी एक्विजिशन है, तो इन ट्रांजैक्शन में भी नेक्सस होता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, कंट्रोल होता है पेरेंट और अल्टीमेट पेरेंट का. तो हमने बोला इस केस में हम फेयर वैल्यू नहीं करेंगे. अदरवाइज मुझे अपनी बुक स्ट्रॉन्ग करनी है, मैं अपनी ग्रुप कंपनी से ग्रुप कंपनी को खरीदवाऊंगा और उसको मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा और मैं उस पर गुडविल, कैपिटल रिजर्व जो मुझे करना है मैं करता रहूंगा. हमने बोला ओके,
सारे बिजनेस एक्विजिशंस को तो फेयर वैल्यू पे करेंगे जैसे आप आईएफआरएस में करते हो, लेकिन अगर कोई कॉमन कंट्रोल एक्विजिशन है, आपस में ग्रुप कंपनियां एक दूसरे को ग्रुप कंपनीज खरीद रही हैं, उस केस में हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाएंगे, बुक वैल्यू मेथड लगाएंगे। आईएएसबी ने नहीं माना हमारी बात को, एंड लेट मी टेल यू, 1 साल पहले आईएसबी हमारी बात को मान गया और अब वो अपने आईएफआरएस स्टैंडर्ड को चेंज कर रहे हैं, राइट? एंड दे आर आल्सो अप्लाइंग द सेम ट्रीटमेंट व्हिच वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन आवर इंड एएस लिटरेचर। तो थोड़े दिनों में ये जो कार्विन आपको दिखता है, कार्विन यहाँ से हट जाएगा। क्यों? बिकॉज आफ्टर 3-4 months we and IASB IFRS are on the same page, right, relating to this particular treatment. रिमूवल ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आईएएसबी ने अपने आईएफआरएस में 2 ऑप्शन दिए, जैसे हमारे यहाँ भी एएस 10 में 2 ऑप्शन है ना, कि आप अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, इन दोनों में से किसी पे भी रख सकते हो, राइट? वैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले स्टैंडर्ड में 2 ऑप्शन थे इंड एएस 40 में। वो 2 ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन ये था कि हम चाहे तो कॉस्ट पे भी कैरी कर सकते हैं, चाहे तो हम फेयर वैल्यू भी कर सकते हैं। पर हमने बोला, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो प्रॉपर्टी होती है, लैंड एंड बिल्डिंग होती है, जिसको हमने कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है, नॉट फॉर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने जो बिजनेस का नेचर है हमारा, उसके लिए नहीं रखा हुआ, हमने तो रेंटल के लिए रखा हुआ है, या हमने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है। तो अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो आईएफआरएस कहता है फेयर वैल्यू पे दिखाना, फेयर वैल्यू पे दिखा लो, कॉस्ट पे दिखाना, कॉस्ट पे दिखा लो। हमने बोला कि देखो भाई साहब, हम फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ कॉस्ट पे कैरी करेंगे, सो दैट कि जो अनहेल्दी बैलेंस शीट्स हैं वो हेल्दी ना हो जाएं जस्ट इसकी नोशनल फेयर वैल्यू दिखाकर। तो हमने वहां पर चेक लगा दिया, हमने वहां रोक दिया, हमने बोला कि हम सिर्फ कॉस्ट पे दिखाएंगे, लेकिन फेयर वैल्यू को हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे, सो दैट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल अंडरस्टैंड इस कंपनी के पास जो एसेट्स पड़े हैं उसकी आज की डेट में वैल्यू इतनी है, राइट? तो ये जो चेंजेस है, कार्व आउट, कार्विन और रिमूवल ऑफ ऑप्शन, आई होप आपको ये चेंजेस समझ में आ गए हैं। और इन चेंजेस को अगर मिला दिया जाए आईएफआरएस के साथ, तो देन दिस लिटरेचर इज कॉल्ड एज अ इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट? सो इंड एएस और आईएफआरएस में डिफरेंस क्या है? इंड एएस और आईएफआरएस का डिफरेंस है कार्व आउट, कार्विन एंड रिमूवल ऑफ ऑप्शन. So India has of course converged to IFRS, right? Any question so far? Any question? I'll take a pause for let's say 15 seconds. If you have any question, you can just write down on the chat box. So Mr. Lavnees, only one Carvin was there, and even this will not survive after 3-4 months, right? Only one Carvin was there. There are 3-4 removal of option, 2 or 3 removal of option, 8 or 9 carve outs, and 1 Carvin, right? Yeah. So when we started, there was more carve out. So Mr. Abhay is asking how many IFRS is being converged. So Mr. Abhay, there are total 40 standards in IFRS, 16 IFRS, 24 IAS. So out of the 40 standards, 39 standards have been converged. There is only one standard, IAS 26, which have not been converged into India, right? So apart from one IFRS, I mean to say one IAS, all the 39 IAS have been converged as a Ind AS, right? I'll show you the list as well. Where are we moving? Of course, we are moving towards, we have moved, I'll not say moving, we have moved from AS to Ind AS. So as of now, all the listed companies are reporting into Ind AS, all the listed companies, all the unlisted companies whose net worth is more than 250 crores is reporting into Ind AS, right? Whose net worth is more than 250 crores. And the group companies, when I say group companies, for example, if Ind AS is applicable on one company, then its holding, its subsidiary, joint venture, and associate. So on these set of companies, Ind AS are also applicable. For example, if you see the related party list of Reliance Industries Limited, so it's a long list, 18-19 pages list. And there are very small companies, like they have a share capital of 1 lakh rupees and they have a, let's say, net worth of, let's say, negative net worth of 20 lakh rupees. Even though on these companies, Ind AS are applicable. Why? These are unlisted entity. Net worth is even minus 20 lakh. So why Ind AS is applicable? Because these are the subsidiary of the company on which Ind AS is applicable. So if these are the Reliance subsidiary, Reliance joint venture, Reliance associate, so on these set of companies, Ind AS is applicable, right? So of course, we are moving towards global approach from Indian approach. Of course, we are moving towards fair value approach. And let me tell you, more than 20 standard talks about fair value, right? For example, your financial instruments actually talks about the fair value, right?
there is a standard which talks about fair value measurement. एक इकलौता स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि फेयर वैल्यू निकालनी कैसे, मतलब एक गाइडेंस का स्टैंडर्ड है जो फेयर वैल्यू के बारे में बात करता है. Reporting versus accounting, of course, if I talk about the IFRS financial statement, so just if I talk about the thickness of the IFRS financial statement, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके 30 पेज में बनते हैं तो IFRS में आराम से वो 50 पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे. Why? There are robust disclosure on every standard. Okay, so IFRS की अगर Ind AS की बात करूं तो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं. आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ साथ आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी डिस्क्लोज करने हैं और आपको जजमेंट्स भी डिस्क्लोज करनी है. आपने जो जजमेंट्स अप्लाई की हैं, एस्टिमेट अप्लाई की है अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनल करने के लिए, आपको वो सारा डिस्क्लोजर्स भी करना है. एंड इन एवरी स्टैंडर्ड there are very increased disclosure, there are complex disclosure, detailed disclosure, so that user of the financial statement will be able to understand that कि कंपनी में कैसे क्या चल रहा है. फॉर एग्जांपल, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे उसमें हम ये नहीं दिखाते थे कि कंपनी के पास रिस्क क्या क्या है. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के 2 ही डेटर हैं, 2 ही कस्टमर है. सो कंपनी का रिस्क क्या है? अगर 2 ही कस्टमर है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है. अगर 2 कस्टमर है, दोनों अगर इंसॉल्वेंट हो जाएं, अगर दोनों कंपनी से बिजनेस छोड़ दें तो कंपनी खत्म हो जाएगी. जितना वेराइड पोर्टफोलियो रहेगा उतना ही आपका रिस्क कम होता है, राइट? सो as a user of the financial statement, while looking at the Ind AS financial statement, I will be able to understand, yes, the company has a credit risk, the company has a concentration risk, the company has a business continuity risk. तो ये मुझे इससे पता लगेगा, AS के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता लगता. और कंपनी ने उस रिस्क को मिटिगेट कैसे किया है वो भी पता लगता है. ठीक है, कि कंपनी का रिस्क तो है, मिटिगेशन प्लान क्या है, और कंपनी का रिस्क इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है आज की डेट में, कंपनी का टॉप लाइन कितना है, कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, कंपनी का कितना डेटर्स कितने आउटस्टैंडिंग है, उसकी एजिंग क्या है. तो ये सारी चीजें हमें Ind AS से पता लगती हैं. सो देयर आर वेरी रोबस्ट डिस्क्लोजर्स अबाउट Ind AS, ओके, इन Ind AS स्टैंडर्ड्स. सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एज आई टोल्ड यू, इफ आई टॉक अबाउट कंसोलिडेशन स्टैंडर्ड, जब आप कंसोलिडेशन पढ़ोगे अगर, तो कंसोलिडेशन में देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां आपका स्टेक 40% है दूसरी कंपनी में, तब भी आप कंट्रोल कर रहे हो. सो मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर का कोई जनरल रूल नहीं है यहाँ पे. There could be a situation where one is holding 40% and again he is controlling. तभी यहाँ पर माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, NCI का कॉन्सेप्ट है. अगर मैं रेवेन्यू के स्टैंडर्ड की बात करूं तो पूरा का पूरा रेवेन्यू स्टैंडर्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे बसा हुआ है, राइट? कि आपने आज की डेट में अगर कोई सामान बेचा है और सामान के साथ फ्री में सर्विस भी दी है, तो आपको सर्विस के पोर्शन का भी रेवेन्यू अलग से आइडेंटिफाई करना है, अलग से एस्टिमेट करना है. और जब वो सर्विस आप दोगे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, उसका रेवेन्यू तब आप रिकॉग्नाइज करोगे, चाहे सारा का सारा पैसा आज आ गया है आपको. सो अगेन सब्सटेंस ओवर फॉर्म स्टैंडर्ड. अगर मैं लीजेस की बात करूं, सो चांदनी विल आल्सो टॉक अबाउट लीजेस, नॉट टुडे ऑफ कोर्स, ऑन 5th और 6th डे. अगर मैं लीजेस की बात करूं तो लीजेस तो कंप्लीटली सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला स्टैंडर्ड है, जहां पर आपने मकान किराए पे लिया बट उसका एसेट आप अपनी बुक्स में बना रहे हो. I'll not go into the details, I'm just giving you highlights, okay? तो अगर मैं बात करूं सब्सटेंस ओवर फॉर्म की, अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो हम इंडिया में क्या करते थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम उसको दिखाते थे शेयर कैपिटल. इट इज एक्चुअली नॉट अ शेयर कैपिटल. गोइंग बाय द सब्सटेंस, इट इज अ लायबिलिटी. आपको तो 5 साल बाद रीपेमेंट करनी है उसकी, इट इज अ लायबिलिटी. कन्वर्टिबल डिबेंचर है, हम उसको दिखाते थे लायबिलिटी. इट इज एक्चुअली नॉट अ लायबिलिटी, इट इज योर इक्विटी. तो IFRS Ind AS में हम उसको इक्विटी दिखाते हैं, राइट? So if I talk about Indian accounting standard, there are a lot of standards which have been framed on the basis of substance over form, right? So this is one of the key criteria while developing Ind AS. Although this kind of criteria was there in our framework for the preparation and presentation of financial statement, which was issued by ICAI, but वो सिर्फ framework में लिखा, हम apply नहीं करते अपनी आम जिंदगी, right? Principle based versus rule based, I told you, since the standards are substance based, so there are use of more of principles rather than rule, right? So like more than half of the voting power is not there, there is a principle, okay? You need to look at the agreement, you need to look at the contracts, right? And accordingly you need to take a decision whether this country, this company is controlling that company or not, right? So why, of course, why is 140 countries or more are using IFRS, by using this IFRS by way of adoption and convergence? In India, we are using this standard by way of convergence. One language will of course enhance comparability, understanding, and one set of books. For example, classic example is Infosys. Infosys is listed in Nasdaq Stock Exchange of USA.
सो इन्फोसिस अपना इंड एएस में फाइनेंशियल्स बनाती है और आईएफआरएस में फाइनेंशियल्स बनाती है। पहले आईएफआरएस बनाती थी यूएस के लिए और इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले बनाती थी फाइनेंशियल। तो बहुत डिफरेंस होता था दोनों के फाइनेंशियल्स में। आज की डेट में जो बंदा इंड एएस बनाता है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट डाल के वही आईएफआरएस भी फाइनल कर देता है, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है आईएफआरएस और इंड एएस, 99% कट कॉपी पेस्ट, राइट। कोई छोटा सा डिफरेंस है अगर कोई थोड़ा बहुत, तो वो डिफरेंस के साथ उसको वो फाइनल कर देते हैं, राइट। Easy access to global capital market attract foreign investment, low cost of capital. Of course, आज मुझे अगर दुबई मार्केट से फंड रेज करना है मिडिल ईस्ट से, तो मैं क्या करूंगा, अपने इंड एएस के फाइनेंशियल्स को आईएफआरएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। सो हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर और 1 hour. It's a 1 hour job, right? And it is more transparent and visible as well. Coming to the literature, of course, जो भी आईएफआरएस के स्टैंडर्ड थे, आईएफआरएस 1 to आईएफआरएस 16, हमने उसको नाम दिया इंड एएस 101 to इंड एएस 116। जो भी आईएएस स्टैंडर्ड थे, मतलब आईएएस 1 से आईएएस 14, हमने उसकी सीरीज रखी इंड एएस 1 से इंड एएस 41। हम दोनों को इंड एएस 1 नहीं बोल सकते थे क्योंकि हमने लिटरेचर का नाम सेम रखा है। वहां पर आईएएस भी है और आईएफआरएस भी है। तो जहां पर आईएएस 1 था वो हमने इंड एएस 1 से शुरू कर, सेम नंबर रखा, आईएएस 1 इंड एएस 1, आईएएस 2 इंड एएस 2, आईएएस 3 इंड एएस 3, आईएएस 4 इंड एएस 4। और जो भी स्टैंडर्ड डिलीट हो गए वो हमने भी ब्लैंक छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल आईएएस 3, 4, 5, 6 नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो आईएफआरएस में चला गया। तो हमने भी इंड एएस 3, 4, 5, 6 आपको हमारे पास भी नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, राइट। सो इंड एएस 1, इंड एएस 2, इंड एएस 7 उसके बाद सीधा। क्यों? क्योंकि आईएएस 1, आईएएस 2, 3, 4, 5, 6 वहां भी नहीं है। और जो आईएफआरएस के स्टैंडर्ड है वो हमने इंड एएस 100+1 से शुरू कर दिया। आईएएस इंड एएस 1 से, आईएफआरएस इंड एएस 100+1 से, राइट। और जितनी भी इंटरप्रिटेशंस थी वो हमने जिस भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड थी उस स्टैंडर्ड के लास्ट में डाल दिया, राइट। और अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो ये आपके सामने लिस्ट है, जहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में हमने इंड एएस के नंबर रखे हैं, राइट साइड में हमने आईएफआरएस के नंबर रखे और आई गैप का नंबर हमने एक्सट्रीम राइट साइड में रखा है। फॉर एग्जांपल इंड एएस 1 इज इक्वल टू आईएएस 1 इज इक्वल टू एएस 1, इंड एएस 2 इज इक्वल टू आईएएस 2 इक्वल टू एएस 2। 1, 2 के बाद सीधा 7 है, तो आईएफआरएस में भी आईएएस 7 ही है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 39 इंड एएस, ओके, 39 इंड एएस। लेकिन हमारे पास कितने इंड एएस थे? 27, सॉरी कितने एएस थे? 27 एएस। इसका मतलब बहुत सारी ऐसे लिटरेचर है, बहुत सारे ऐसे गाइडेंस है जिसपे हमारे पास पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे ही नहीं, उस पे भी हमने क्या किया, उस पे भी हमने इंड एएस इशू किए हैं, हमने इंड एएस कन्वर्ज किया। क्यों किया? क्योंकि आईएफआरएस में गाइडेंस अवेलेबल था। एग्जांपल एग्रीकल्चर अकाउंटिंग, राइट। सो एग्रीकल्चर अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल टाटा कॉफी, राइट, फॉर एग्जांपल धनुश्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है? इंड एएस 41 के अकॉर्डिंग होती है, लिस्टेड कंपनीज हैं ये, राइट। तो पहले एग्रीकल्चर पे कोई एएस में गाइडेंस ही नहीं था, बट अब एक इंड एएस 41 है जो बात ही एग्रीकल्चर अकाउंटिंग की करता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे पहले हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही नहीं। एएस 30, 31, 32 आए तो थे, बट वो कभी नोटिफाई नहीं हुए, वो रिकमेंडेटरी थे, वो मैंडेटरी कभी नहीं हुए, राइट, वो कभी हुए ही नहीं मैंडेटरी। क्लियर? तो लेकिन आज की डेट में 3 इंड एएस है जो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इंड एएस 107 जो डिस्क्लोजर की बात करता है, इंड एएस 109 जो रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, डेरिवेटिव हेजिंग की बात करता है, इंड एएस 32 जो प्रेजेंटेशन की बात करता है। अगर मैं शेयर बेस्ड पेमेंट की बात करूं, एक कंपनी ने ईसॉप दिया अपना एम्प्लॉय को, स्टैंडर्ड ही नहीं था, गाइडेंस नोट था एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे, लेकिन यहाँ पर पूरा फुल फ्लेज एक स्टैंडर्ड है। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, गाइडेंस नोट था। यहाँ पूरा एक स्टैंडर्ड है इंड एएस 104 जो कि आईएफआरएस 4 का काउंटर पार्ट है। अगर मैं बात करूं माइनिंग कंपनीज की, तो एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, एक गाइडेंस नोट हुआ करता था, गाइडेंस नोट ऑन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जो ओएनजीसी और रिलायंस के लिए आया था। पर आज की डेट में इंड एएस 106 एक फुल फ्लेज स्टैंडर्ड है, राइट। अगर मैं बात करूं फेयर वैल्यू मेजरमेंट की, तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं, क्योंकि ज्यादा फेयर वैल्यू की बात नहीं होती थी। बट आज की डेट में इंड एएस 113 एक पूरा इकलौता स्टैंडर्ड है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, राइट। तो अगर मैं रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स की बात करूं, तो रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स पे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। तो रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स क्या होते हैं? अगर आप पावर कंपनीज की बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पर आपको रेगुलेटरी एसेट्स और रेगुलेटरी लायबिलिटीज मिलेंगे, राइट। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है? इंड एएस 114 एक इकलौता स्टैंडर्ड है जो ये बताता है। हमारे पास लेवीज को लेकर एक स्टैंडर्ड, एक गाइडेंस नोट हुआ करता है,
accounting standard scenario में. So friends, this was an overview on Ind AS. So Ind AS applicable कितनी कंपनीज पे है? So of course Ind AS जो मेरा applicable है वो सारी की सारी listed companies पे applicable है Ind AS. और इन लिस्टेड कंपनीज के अलावा अगर मैं बात करूं तो लिस्टेड कंपनीज के अलावा जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं अगर उनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो उस पे Ind AS एप्लीकेबल है. और ग्रुप कंपनीज पे Ind AS एप्लीकेबल है, मतलब अगर एक पे हो गया तो उसके पिताजी पे, आई मीन टू से होल्डिंग कंपनी, उसके बच्चों पे, आई मीन टू से सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स पे भी Ind AS अप्लाई होगा. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. Ind AS नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे अप्लाई नहीं होता. अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप को सजेस्ट करोगे कि बढ़िया क्लाइंट है 2-4 लाख रुपए दे दे, हम इस पे Ind AS लगा देते हैं, तो आप Ind AS नहीं लगा पाओगे, उस पे एप्लीकेबल ही नहीं है Ind AS. तो किसी पार्टनरशिप पे, प्रोप्राइटरशिप पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे, कॉर्पोरेट पे, एनजीओ पे आप Ind AS नहीं लगा सकते. सर क्या सेक्शन 8 कंपनी पे Ind AS लगा सकते हैं? यस. अगर वो कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 में या कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो आप उस पे Ind AS लगा सकते हैं. सर क्या एलएलपी पे लगा सकते हैं? नो, एलएलपी पे Ind AS एप्लीकेबल नहीं है. राइट. सर अगर कोई कंपनी एसएमई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उस पे Ind AS लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी लगा सकते हैं. राइट. सर बैंक पे Ind AS लगा सकते हैं? 2017-2018 में नोटिफिकेशन था, 2018 में नोटिफिकेशन आया और आरबीआई ने बैंक पे सीनेडाई डेफर कर दिया है. तो अगर आप गूगल करोगे तो आप बोलोगे मैंने गलत पढ़ाया है, क्योंकि क्या पता आपको 17-18 का नोटिफिकेशन मिल जाए. लेकिन मार्च में नोटिफिकेशन आ गया था और अभी बैंकों पे कोई प्लान नहीं है Ind AS कब आएगा, अभी तक कोई डेफिनेट प्लान नहीं. सर क्या अभी एलआईसी का आईपीओ आ रहा है तो सर एलआईसी पे Ind AS का काम मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता. एलआईसी पे Ind AS एप्लीकेबल नहीं है. इंश्योरेंस कंपनीज पे Ind AS एप्लीकेबल नहीं है. IRDA ने बोला था कि अप्लाई होगा, लेकिन ग्लोबली एक नया स्टैंडर्ड आया है, इंडिया उस पर काम कर रहा है, तो तभी IRDA ने भी इंश्योरेंस कंपनीज पे Ind AS डेफर. राइट. सो इंश्योरेंस कंपनीज पे Ind AS एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनीज पे Ind AS एप्लीकेबल नहीं है. अगर कोई कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उस पे एप्लीकेबल नहीं है. और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे Ind AS एप्लीकेबल नहीं है. या फिर वो कंपनीज जो कि इंडिविजुअल कंपनीज है, मतलब किसी ग्रुप में नहीं फॉल करती, जिन पे Ind AS लगता है और उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, तो उस पे भी Ind AS नहीं लगेगा. सो दिस वाज द नोटिफिकेशन क्राइटेरिया. नोटिफिकेशन आया कब था? अगर आपको Ind AS पढ़ना है तो आपके लिए जो पहली तारीख होनी चाहिए, द फर्स्ट डेट वुड बी 16 फरवरी 2015, क्योंकि ये सारे Ind AS 16 फरवरी 2015 को नोटिफाई हुए थे और इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप भी 16 फरवरी 2015 को नोटिफाई हुआ था. सो थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, so I will be happy to take those questions in another 2-3 minutes. Then Chandni will take over for her session. Yeah. Thank you, Alok bhai, for your wonderful session, and you have given the roadmap and applicability and difference between the IFRS and AS and Ind AS. So I think everyone has cleared about the background of these standards. Any query you can post right now before Alok ji leave, and Chandni ji will take up the next session. Alok ji, this certificate of appreciation for you from our side. Thank you so much, Sumit bhai. So I hope the session would be conclusive, not confusive, because no one has any query. No, but you have cleared in this simple language that we can say everyone has cleared about the roadmap applicability and these issues. So I think one of the question which is there on the chat box, that please clear about the company listing process. Yes, the company which is in the process of listing, so these companies are also required to apply Ind AS, right? So अगर आप बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आए हैं, अगर वो लॉस मेकिंग कंपनीज भी है, नेटवर्थ नेगेटिव है, तो आप देख सकते हैं उन्होंने अपना जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया होगा वो Ind AS में किया होगा. So Mr. Kamal is asking when will be IFRS 17 applicable in India? So Mr. Kamal, globally IFRS 17 will be applicable from 1st January 2023. So which is the date which is notified by IASB. So as of now, but in India, of course, we are of course planning for this 1st April 2023, but nothing is clear so far.
सो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे पास्ट में जब IFRS 15 आया तो ग्लोबल आया 1 जनवरी 2018 से, हमने अप्लाई किया 1 अप्रैल 2018 से। IFRS 16 आया 1 अप्रैल 19 से, 1 जनवरी 19 से, हमने अप्लाई किया 1 अप्रैल 19 से। तो अगर पास्ट ट्रेंड देखें, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को पास्ट ट्रेंड देखने की आदत भी होती है, तो मैं अगर पास्ट ट्रेंड देखूं तो 1 जनवरी 23 से अगर ग्लोबली लगना है तो 1 अप्रैल 23 से हमें लगाना चाहिए। But I'll not comment on that because nothing is on the pen and paper, so nothing is into black and white, so I don't want to create any confusion. Okay, but हाँ होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 से। Yeah. So Mr. Lavneesh, चाहे कोई भी क्राइटेरिया फॉल करता हो, अगर LIC कल को रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी सब्सिडरी बन जाए तो भी उस पर Ind AS नहीं लगेगा, एक्सेप्शन है। बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी क्लासिक केस आपको मिलेगा, आप HDFC लाइफ के बैलेंस शीट खोल लीजिए। HDFC लाइफ का एसोसिएट है HDFC बैंक। HDFC लाइफ पे सो नॉट HDFC लाइफ, HDFC लिमिटेड। सो HDFC लिमिटेड जो NBFC है उस पे Ind AS लगता है, बट उसके एसोसिएट HDFC बैंक पे Ind AS नहीं लगता। बैंक अपने फाइनेंशियल AS में बनाता है, HDFC लिमिटेड अपने फाइनेंशियल Ind AS पे बनाता है। Yeah, thank you so much guys, because I don't want to waste Chandni's time because he has to take two standards. So yeah, Chandni, over to you. Thank you, Alok ji. Once again, thank you very much. And recording will be available by tomorrow morning, as we are able to download these recordings. So we will share. Now, I request once again, thank you very much, Alok ji, for your wonderful session. Thank you, Shruti ji is Sumit bhai. asking, please answer anything left. Shruti, Poonam ji, any query left by Shruti? There was some query on her behalf. Ji. Yes, Ji. Shruti. So please listen my word carefully. So the sentence which is written on the roadmap notification, if Ind AS is applicable to any company, if it is applicable to any company, then its holding, its subsidiary, joint venture and associate, on all these set of companies Ind AS will be applicable. For example, if Ind AS is applicable on subsidiary company, then it will be applicable on the holding company, right? And if Ind AS is applicable to a company, it will be applicable to its subsidiary, joint venture and associate. So बच्चों पे भी लगेगा और पेरेंट्स पे भी लगेगा। अगर एक पे लग गया तो उनके पेरेंट्स पे भी लगेगा और उनके बच्चों पे भी लगेगा। सिंपल। Thank you very much once again, Alok bhai, for your precious time as always. Thank you, Sumit bhai. Thank you, Poonam ji. Thank you. Now I request Poonam ji to brief about the next speaker, CA Chandni Gupta ji. Definitely, Sumit. Now here we welcome our another eminent speaker, CA Chandni Gupta. CA Chandni Gupta is a CA, certified Ind AS and BRSR from ICAI. She has founded Ifrs World, a domain to share knowledge on IFRS and Ind AS through YouTube and blogs. She has co-authored comprehensive book on leases, treatise on leases with CA Alok Garg. She has delivered more than 60 sessions on Ind AS, IFRS and GAAP at various platforms of ICAI, study circles and various universities. She has delivered in-house trainings on Ind AS and IFRS. We welcome our eminent speaker, CA Chandni Gupta, to carry on with our session on Ind AS 1 and Ind AS 10. Thank you so much, ma'am. Thanks to Poonam ma'am for the wonderful introduction. First of all, thanks to Sumit sir and thanks to Team CASA for always giving me the opportunity to speak on this platform. CASA has been my first platform in which I took my first session, so we'll be forever grateful for Team CASA and Sumit sir. So thanks, sir, for inviting me. And thanks to Alok sir for giving his session on overview. Alok sir is my mentor, and he has given me the opportunities to work on the book. So speaking with him is a wonderful opportunity to me. It's an honor. So thanks to Alok sir for giving me the opportunity. And thanks to all the participants for joining in this session. Team CASA has always been number one in organizing sessions on Ind AS. So I think this is very, very valuable to all of us. So thanks to all the participants for joining. Now let me just quickly share my screen and please confirm if it's visible.
Yeah. So I request all the participants to be interactive in this session, and we will try to answer all your queries side by side. Right. So just please quickly let me know if my screen is visible. Yes. Yeah, the screen is visible. Okay, good. So Alok sir has given a very detailed overview of Ind AS. What are Ind AS, how they've come in India, what are the carve-ins, carve-outs, right? And what are the major implications of Ind AS. So everything has been already discussed, and I understand everyone knows now what Ind AS is. Now, in this session going forward, we'll be discussing Ind AS 1 and Ind AS 10. Right, so these two standards are primarily on how the financial statements are presented and what is included in financial statements, right? So if we talk about AS, the accounting standards which we all have been studying from our childhood, उसमें जो AS1 होता था उसका नाम क्या होता था? Can anyone tell me? What was the title of AS1? Can anyone recall what was the title of AS1? Any tries? Accounting policies, right? Disclosure of accounting policies, correct. So AS1 का title था disclosure of accounting policies, right? So what we understand is AS regime में the first Ind AS was on disclosure of accounting policies, but Ind AS 1, the title of Ind AS 1 is presentation of financial statements, right? अभी presentation of financial statements के ऊपर standard की क्या जरूरत पड़ी? So first of all, financial statements we all understand होते क्या है? Balance sheet, profit and loss account, right? Statement of cash flows, notes, ये सब financial statements का part होते हैं, right? Now every company in India is preparing financial statements. Now, what happens if there is no standard on presentation of financial statements, or there is no guidance on presentation of financial statements, right? Then what will happen? Every company will prepare their financial statements in their own manner, right? There can be different formats. There will be no comparability, no uniformity, right? So, in order to in order to bring uniformity across the nation, these standards have been formulated. Now, presentation of financial statements में क्या हमें format मिलेगा? No. इसमें हमें minimum requirements, minimum disclosures जो करने हैं उसकी guidance मिलेगी. Format के लिए we have to go to Schedule 3 of the Companies Act 2013, right? So basically, Companies Act 2013 में Schedule 3 है. Now, can anyone tell me how many how many divisions of Schedule 3 are there? Is anyone aware of it? Will all the companies have to refer to Schedule 3? Correct, 3. So all of the answers are correct. 3. There are 3 divisions to Schedule 3: Division 1, Division 2, and Division 3. Division 1 is for companies which are applying AS. Division 2 is for companies which are applying Ind AS but are not NBFCs, right? Non-NBFCs. And Division 3 is for companies which are applying Ind AS and are NBFCs, right? So basically, Schedule 3 gives you the format of financial statements, and Ind AS 1 tells you the basic or the minimum requirements of the disclosures which are required in the financial statements, and how you have to present the financial statements. आपने balance sheet और profit and loss तो बना लिया, but उसमें क्या-क्या line items होने जरूरी हैं, right? All these minimum requirements are specified in Ind AS 1. Now, as I've told you, the objective of this standard already, so this is for presentation of journal purpose financial statements. So journal purpose financial statements क्या होते हैं? Journal purpose means which is useful for public at large,
right? That means it is not prepared for a specific purpose. It is prepared for a general purpose. Specific purpose जैसे कि मैनेजमेंट को कोई एक पर्टिकुलर आइटम देखना है या कोई पर्टिकुलर स्टडी देखनी है, एनालिसिस देखना है, तो वो मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, right? And general purpose means anyone can use it, the investors can use it, the government can use it, all the stakeholders of the company can use those financial statements for their decisions, right? Now, to ensure comparability, of course, अगर comparability नहीं होगी, अगर uniformity, first of all, uniformity नहीं होगी तो comparability नहीं होगी, right? Because for comparison, you always need an apple to apple item, right? So, उसके लिए uniformity होना बहुत जरूरी है. Comparability can be between companies or for the company between different periods, right? And the last objective is to set the overall requirement for the presentation of financial statements, guidelines for their structure, not the structure, but the guidelines for their structure, right? Minimum requirements for their content. अब format balance sheet में asset पहले आएगा या liabilities पहले आएंगी, वो format schedule 3 बताएगा. But अगर asset है तो asset में क्या क्या line items आएंगे minimum, वो Ind AS 1 बताएगा. Schedule 3 में भी है, but minimum requirement has been specified in this standard. So first of all, we need to understand what is the purpose of financial statements. So all we know, financial statement में क्या क्या होता है? What are the major components of financial statement? First of all is the balance sheet that we all know, right? Balance sheet से क्या पता चलता है? Balance sheet से company की financial position पता चलती है as at any date, right? किसी भी दिन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उससे क्या पता चलता है? उससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है फॉर एनी पीरियड, फॉर अ पीरियड. सो बैलेंस शीट इज ऑलवेज एज एट अ डे एंड P&L is always for a period. And cash flows, right? Cash flows जो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं, and this is also for a period. Right, so these are the major purposes of financial statements. हमें financial position पता चले, financial performance पता चले, and cash flows क्या हो रहे हैं कंपनी के, कौन कौन से activities में cash flows लग रहे हैं, what are the inflows and outflows. So all that information is given through the financial statements. Now, as we have already discussed multiple times, the components are a complete set of financial statements. So now, here's a question for you all. AS के हिसाब से, यानी कि जब Ind AS नहीं थे, तो financial statements में क्या-क्या component आते थे? आप लोग अपने financial statements के लिए कौन-कौन से statements prepare करते थे? Please answer in the question. What statements do you generally prepare? Please write in the chat box, what statements do you generally prepare in financial statement? Balance sheet, profit and loss account, cash flow, notes to accounts, correct. Mr. Pratik is saying SOKI, correct. Okay, yes. So balance sheet, of course, right. Then statement of profit and loss, statement of changes in equity. So all those who have not written SOKI in their answers, this is correct. Why? Because AS में SOKI required नहीं था. This is an additional statement which is required in the Ind AS regime, right? Then cash flow statement we all know. Notes we all know, right? Notes में accounting policies देनी होती है ना, explanatory notes होते हैं. Comparative information that we all know. Then a balance sheet as at the beginning of the earliest comparative period. Now, what is this? This is nothing but a third balance sheet. So basically, whenever you prepare a balance sheet, you always give current year balance sheet and a previous year balance sheet. But in certain cases, you have to give a third balance sheet, which is nothing but a opening balance sheet of the previous period. That means if you are preparing a balance sheet as at 31st March 2021, then comparative will be
31st March 2020, correct? But in certain cases, if those cases are there, then you also have to prepare balance sheet as at 1st April 2019. So this is the third balance sheet. 1st April 2019 is the third balance sheet that is required. So these two statements are additional statements in the Ind AS regime. Now, what is SOCI and what is this third balance sheet? What is the relevance of it? So let me tell you, SOCI is nothing but a statement of changes in equity, right? हम लोग AS के टाइम पे भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट, रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक अलग से नोट देते थे. उसमें क्या होता था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, राइट, एंड देयर मूवमेंट, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर कितना है, क्लोजिंग कितना है, करेक्ट. दिस इज नथिंग बट दैट ओनली. बस इसको एक स्टेटमेंट बना दिया गया है अलग से, जिसमें सारे रिजर्व्स, सारे के सारे अदर इक्विटी के आइटम्स की मूवमेंट दिखाई जाती है, राइट. द ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर्स ड्यूरिंग द ईयर एंड द क्लोजिंग बैलेंस, राइट. सो इसमें क्या क्या आता है? आपका रिटेन्ड अर्निंग्स आते हैं, right, then आपका securities premium reserve, capital reserve and any other reserve that you may have. उसके अलावा इसमें आता है OCI. अब ये OCI क्या होता है? So OCI we will discuss in later slides, ठीक है. So for now we have to understand that statement of changes in equity is nothing but it shows the movement of equity items, right, other equity items. Equity share capital की movement भी दिखाई जाती है. एंड देन उसके अलावा बाकी जितने भी इक्विटी के आइटम्स हैं उनकी मूवमेंट दिखाई जाती है ना सेपरेट स्टेटमेंट, राइट. नाउ कमिंग टू द थर्ड बैलेंस शीट पार्ट. सो ये थर्ड बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करनी है, कैसे पता चलेगा थर्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है? सो देयर आर प्राइमरीली थ्री सिनेरियोज इन व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर अ थर्ड बैलेंस शीट. First is whenever there is a change in accounting policy and there is a retrospective adjustment. Now अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट हमें रेट्रोस्पेक्टिवली लेना पड़ता है. रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि फ्रॉम द इनिशिएशन और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आइटम, मतलब आप जितना दूर, जितना पास्ट में जा सकते हो उतना पास्ट में जा करके इम्पैक्ट निकाल के लाओ और उसका इम्पैक्ट लो आज, करेक्ट. दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. और दूसरा क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. दैट मींस इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो आप उसको फ्यूचर से चेंज करोगे, पास्ट के नंबर्स को चेंज नहीं करते, पास्ट का जो भी इम्पैक्ट है उसको हम नहीं कंसिडर करते, करेक्ट. नाउ अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है उसका हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है. अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई भी चेंज आता है उसका प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा. फॉर एग्जांपल, इफ यू चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, राइट, आप फीफो मेथड से वेटेड एवरेज पे जा रहे हो या वाइस वर्सा, सो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. बट you are changing the method of depreciation from straight line method to WDV. That is a change in accounting estimate, right? तो उसका prospective application होगा. But if there is a change in accounting policy, जैसे कि मैंने बताया the valuation method of inventory, तो उस केस में आपको retrospective impact लेना है. अब Ind AS में क्या बोलते हैं? Ind AS बोलता है कि आप retrospective impact अगर ले रहे हो, then you have to prepare a third balance sheet. इसका मतलब क्या होता है? ये बोलता है कि 1st April 2019 से पहले तक का जितना भी इम्पैक्ट है यू हैव टू एडजस्ट इन 1st April 19 की बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट में आप पूरे इम्पैक्ट को ले लो, आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को रीस्टेट कर दो और उसका एडजस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग्स में कर दो, राइट. तो क्या होगा कि 1st April 19 की जो इन्वेंट्री का नंबर होगा दैट विल बी ऑन द रिवाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, और फिर 31st March 2020 की बैलेंस शीट रीस्टेट हो जाएगी. दिस विल बी रीस्टेटेड एंड दिस विल बी द फ्रेश नंबर, मतलब कि नई अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से, राइट. सो अगर पास में फीफो लगता था और अब कंपनी वेटेड एवरेज पे आ गई तो 1st April 19 से पहले तक का जितना भी इम्पैक्ट है फीफो से वेटेड एवरेज पे आने का वो 1st April 19 की इन्वेंट्री के नंबर में एडजस्ट हो जाएगा और जो भी इम्पैक्ट होगा वो रिटेन अर्निंग में ले लिया जाएगा, राइट. 31st March 2020 की बैलेंस शीट को रीस्टेट कर देंगे अज्यूमिंग वेटेड एवरेज लगता था day 1 से, राइट. तो 31st March 2020 की इन्वेंट्री की
नंबर चेंज हो जाएगा, राइट। और 31 मार्च 2021 पे रिवाइज यानी कि वेटेड एवरेज मेथड पे ही इन्वेंट्री आएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड बैलेंस शीट, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो फर्स्ट केस इज when there is a retrospective application of any accounting policy. Second is when there is a retrospective restatement of items in financial statement. तो अगर आप कोई भी आइटम को रीस्टेट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव होता है, then also you have to present a third balance sheet, right? And also whenever there is a reclassification of items in financial statements, right? अब इसमें एक और केस होता है, वो होता है prior period error. Prior period error. Now you tell me, AS में अगर कोई prior period error होता था तो how do you present it and how do you treat it? आप उसकी accounting कैसे करते थे? Anyone can suggest prior period error की accounting in AS किस तरीके से होती थी? Accounting in current year, prior period expense, separate disclosure in financial statements, absolutely correct. Statement of profit and loss में there used to be a separate line item called prior period expense, right? वहां पे आप उसको दिखा देते थे. But in Ind AS this is prohibited. आप statement of profit and loss में prior period expense करके कोई line नहीं है. आप separately उसको line में नहीं दिखा सकते. You have to present a third balance sheet. आपको numbers restate करने पड़ेंगे, आपको numbers correct करने पड़ेंगे. Right, so this is how the prior period errors are also treated. But इसमें एक चीज है that if it's immaterial, तो आप उसको current year में impact ले सकते हो. But if it's material, then you have to present a third balance sheet. Now there is one more case when you have to present a third balance sheet, which is first time adoption of Ind AS. अगर आप फर्स्ट टाइम Ind AS अडॉप्ट करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम Ind AS अडॉप्ट करते हैं तो आपको Ind AS 101 लगाना पड़ता है, राइट? आपको Ind AS 101 लगाना पड़ता है. तो उस केस में क्या होता है कि आपको थर्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन. इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर 31 मार्च 2021 के फाइनेंशियल्स पे Ind AS लगा रहे हैं, then you have to present a balance sheet of 31st March 2020 and 1st April 2019. So these are certain cases in which you have to prepare the third balance sheet. Right now, general features or overall considerations. So financial statements prepare करने के लिए just overall guidance जो ये standard देता है is presentation of true and fair view and compliance with Ind AS. So basically, Ind AS 1 बोलता है that you have to give an unreserved and explicit statement of compliance. Now, this is something which is new in Ind AS because AS में ऐसा नहीं होता था. AS में क्या होता था? AS में the management used to prepare financial statements as per AS, and then auditor used to come and give an audit opinion that yes, the financial statements give a true and fair view. True and fair view का मतलब होता था that the financial statements are in compliant with the accounting standards, right? So अगर overall देखा जाए तो in case of AS, the management did not have the the auditors had the onus to check that the financial statements were in compliance with AS. But now in Ind AS, the onus has shifted from auditors to management. Why? Because now management has to give a statement of compliance that yes, all the that our financial statements are in compliance with all the Indian accounting standards, right? So they have to give this explicit and unreserved statement of compliance in the notes that yes, the financial statements have been prepared in accordance with Ind AS, and all the Ind AS have been complied with, right? So this is one additional requirement. Mr. Lavnish is asking what will be the criteria of materiality. So that is like a detailed concept in this.
right? So for that, you'll have to go through the standard separately. Mr. Atul is asking, so prior period expense will be reflected in both current and as on 1st April 19 balance sheet. No, if you will restate the 1st April 19 balance sheet, and if the impact is still there only, then it will be, there will be no presentation in current financial year. Exceptional items and extraordinary item differences. Sorry, so extraordinary items or exceptional items, extraordinary items are also not shown in the Ind AS P&L. Now, please, whosoever is writing on the screen, please don't write. Yeah, so next general feature is the going concern. So going concern एक ऐसी term है जिससे हम सब aware हैं, right? हम सबको पता है going concern क्या होता है. Going concern just by definition is company अगले company will run for a foreseeable future. What is a foreseeable future? General understanding होती है at least 12 months, right? So balance sheet date से 12 months तक company अगर run कर सकती है, there is no intention to liquidate the company, there is no requirement to liquidate the company or stop the operations, then in that case the company is considered to be a going concern, and going concern के basis पे financial statements prepare होते हैं. If the company is not a going concern, right, then in that case financial statements will have to be prepared in any other manner. Matlab, you will not be able to assume that it's a going concern. You will have to present the assets and liabilities at their suppose realizable values, right? So the numbers will change, the accountings will change, right? The policies will change in that case. Then accrual basis, we all know that it's not cash basis. The accounts are prepared on accrual basis. Aggregation and materiality, right? Materiality में आपको देखना होता है, if the number is immaterial, can you aggregate it with any other number? Offsetting. So Ind AS जो है वो offsetting को prohibit करता है. The assets and liabilities cannot be offsetted. But if any particular Ind AS require it to be offset, then in that case you can do and go. You can go ahead and do the offsetting. For example, Ind AS 32 or Ind AS 109 on financial instruments. वो कहता है कि अगर if there is an intention to settle the asset or liability in net, in that case you can offset the financial asset and financial liability. So for example, एक party, एक vendor है आपका, उसके साथ आपका एक payable भी है, एक receivable भी है, right? And the intention is to settle the asset and liability or receivable and payable in net. In that case, you can offset it, right? You can show the net balance. But if there is no intention to settle it in net, then you will have to show the asset separately and you'll have to show the liability separately. Frequency of reporting, right? So it depends. Generally, the annual financial statements are prepared, but in case interim financial statements can also be prepared. Ind AS 34 है उसके ऊपर, interim financial statements के ऊपर, right? So suppose the listed companies who have to submit the quarterly results, so they prepare quarterly financials, right? Comparative information is required. Consistency of presentation. So accounting policies are always applied consistently. If there is any change in accounting policy, detailed disclosure is required, retrospective application is required. So that is why it is said that accounting policies are required to be applied consistently over the period of time. Now, what is the general structure or content of the financial statement? So let me tell you that once you prepare the balance sheet and statement of profit and loss and SOKI and cash flow statement with the comparatives, then you start preparing the notes, right? Notes में क्या आएगा? General content क्या होगा? So first of all, the identification of financial statements, of course. So first of all, एनुअल रिपोर्ट जो कंपनीज की बनती है उसमें काफी सारी स्टेटमेंट्स होती है, काफी सारी रिपोर्ट्स होती है, जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है, राइट? देयर आर
various reports in the annual report. So Ind AS 1 says that you have to distinguishedly identify the financial statements. You have to show that this is a say standalone financial statement or a consolidated financial statements of the company. तो आपको title देना बहुत जरूरी है, right? Then reporting period आपको mention करना जरूरी है, at least annually होता है. अगर छोटा या ज्यादा होता है period, then you have to explain that why you are preparing for a period say more than 12 months, right? Then what is the information required? तो आप जब notes बनाना शुरू करते हैं, then you have to give the name of the company, a little bit of background of the company, right? Individual or group financial. So ये standalone है या फिर consolidated financial statements है, that also you have to show. Period covered, currency, and the level of rounding, right? So these are few mandatory items that you have to take care of while you prepare the financial statements as per Ind AS. Now we go statement by statement. So first of all, as we speak about balance sheet में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है as per Ind AS 1. First of all, current and non-current के distinction, right? Financial statements अगर आप Ind AS के देखेंगे तो उसमें आपको current और non-current अलग-अलग दिखेगा, right? Then classify based on liquidity if more relevant. जैसे कि NBFCs की जो financial statements हैं, Division 3 to the Schedule 3, right? उसमें जो format है, that is based on liquidity. Sorry, that is based on financial and non-financial items. But अगर मान लो कि company going concern नहीं है, right? And in that case, what happens is liquidity is more relevant, right? तो उस केस में आपको assets और liabilities को basis liquidity present करना होता है, classify करना होता है, right? Then obligatory or minimum line items on the face of balance sheet. तो वो हम आपको next slide में we have given the minimum items which has to be there on the face of balance sheet. So what are these items? PPE, property, plant and equipment. We all know tangible assets, investment property, intangible assets, financial assets. Right, उसमें क्या क्या आता है? Trade, other receivables, cash and cash equivalents, biological assets. जैसे कि सर ने बताया कि Ind AS 41 agriculture के लिए specifically एक standard है Ind AS में that deals with the agricultural items. So biological asset is an agriculture item and it is guided by Ind AS 41. Then inventories, investments accounted for using equity method. Right, so these are the minimum items which has to be there on the face of balance sheet, right? Or non-current items and liabilities classified as held for sale, trade and other payables, provisions, financial liabilities, liabilities and assets for current tax, deferred tax asset or liability, NCI within equity, issued capital and reserves attributable to the equity holders of the parent. So these are just minimum items which have to be there on the face of balance sheet. But again, it depends on company to company, industry to industry, that what all items may be more relevant for the understanding of the stakeholders, and they can add more line items on the face of their balance sheet, right? So this is done. Then disclosure required on face or in notes, right? So relevant sub-classification of items above, information of share capital and reserves. So basically, जो disclosures आपको notes में देने हैं. So the balance sheet, the statements that you prepare, balance sheet and statement of profit and loss, for every item you have to give a note, right? The explanatory note in which the required disclosure will be given, item का breakup दिया जाएगा. So all these disclosures are required. Now, similarly for statement of profit and loss, now we come to the OCI thing. So we all understand statement of profit and loss क्या होता है, right? There is income, there is expense, right? There is tax expense, then there is profit. That's it, right? But in Ind AS, there is one more item called OCI, other comprehensive income. Now, OCI or the other comprehensive income is shown as a separate section in the statement of profit and loss. Yani ki this is the section 1 and this is section 2, right? So profit for the year yahan tak aa gaya, uske baad other comprehensive income के items आएंगे यहाँ पे, and then total comprehensive income will be
shown. So this is how the statement of profit and loss looks like in case of Ind AS. Right? अब ये other comprehensive income होता क्या है? What are the items in this? So other comprehensive income में वो items आते हैं जिनको profit and loss के जिनको statement of profit and loss में recognize नहीं किया जा सकता. राइट ये स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक Ind AS बताता है कि आपको इसको OCI में डालना है. सो इफ यू आस्क मी अदर एक्सपेंसेस को OCI में डाल दे क्या? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को OCI में डाल दे क्या? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए जो OCI में आइटम जाएगा दैट विल बी गाइडेड बाय स्पेसिफिक Ind AS. सो फॉर एग्जांपल Ind AS 16 ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. राइट, Ind AS 16 गिव्स यू टू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि आप अपने पीपीई को कॉस्ट मॉडल पे मेजर करो या फिर उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर करो. करेक्ट. कॉस्ट मॉडल के केस में आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है माइनस द डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट. रिवैल्यूएशन मॉडल के केस में यू रीवैल्यू द आइटम ऑफ पीपीई. रीवैल्यू का मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हो. राइट. तो अब उस केस में जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस बनता है, इसका मतलब आपकी कैरिंग अमाउंट से 1 लाख रुपीस की और आपका रिवैल्यूड अमाउंट जो आती है, जो रिवैल्यूड वैल्यू है उस एसेट की, दैट इज 1,50,000. जो 50,000 का सरप्लस है दैट यू हैव टू शो इन OCI. यू कैन नॉट शो इट इन P&L. So these specific items are there which are guided by specific standards जिनको आपको OCI में दिखाना होता है. And this OCI is nothing but a part of other equity. तो आपके सोकी में OCI की मूवमेंट अलग से दिखेगी. Right? So I'll just show you the items which are shown in OCI. So as I have already explained, changes in revaluation surplus, remeasurements of defined benefit plans, जैसे कि आपका gratuity या leave encashment की आप actuarial valuation कराते हैं, right? So if there is a remeasurement on account of actuarial assumptions की वजह से कोई gain या loss आता है, that you have to show in OCI. Gains and losses arising from translating the financial statements of a foreign operation. So आप अगर foreign operation, आपका कोई foreign operation है, उसके financials को आप translate करते हो. आपकी सिंगापुर में कोई foreign operation है, तो SGD में आपके उसके financials हैं, आप SGD से INR में convert करते हो, तो जो भी gain या loss आएगा, that you will have to show in OCI. Right? Then gains or losses. Sorry. Yeah. Gains and losses on equity investment of financial asset measured at fair value through OCI. So when you will, in upcoming session, there is a session on financial instrument. I would request everyone to please attend that session. It will be very, very important because as Alok sir has also explained that Ind AS में fair value की बहुत importance है, right? और ये standards ऐसे हैं जिसमें सिर्फ fair value का काम है, and these standards हर एक एंटिटी पे एप्लीकेबल होते हैं. हर एंटिटी, ट्रेड रिसीवेबल हर किसी एंटिटी के पास होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हर एंटिटी के पास होता है. सो दीज स्टैंडर्ड्स विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द companies. So I request all of the participants to do ensure financial instrument session. So उसमें आपको समझ में आएगा कि what these financial assets are, what are equity investments, what is this fair value through OCI, right? So उसका जो भी गेन या लॉस होता है, अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है विच इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, नाम में ही लिखा है थ्रू OCI, तो जो भी गेन या लॉस होगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन OCI, राइट? देन कैश फ्लो हेज का effective portion. So this is also covered in Ind AS 109. When you'll attend that session, you'll understand what is hedge accounting, what is a cash flow hedge. So for now, all I can say is gain or loss अगर किसी cash flow hedge पे होता है on the effective portion, तो वो भी OCI में recognize होता है, right? Then FVTPL, so that is fine. Share of OCI in associates and joint ventures. So primarily these are the items which are shown in OCI. इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी item को उठा के OCI में डाल दिया. There are specific items and which are guided by specific standards, right? तो आप उन्हीं items को OCI में डाल सकते हैं. Now what is the relevance of OCI? OCI को लाने की जरूरत क्या थी? So as per my personal opinion, OCI में वही items जा रहे हैं which are
kind of giving you a notional increment or decreasing the values notionally, right? Matlab, it is not driven by your operations. Either the market is driving these gains or losses, right? The changes in value of assets, changes in fair value. So all these fluctuations which are happening due to market, and these are not related to your operations. So Ind AS has shown those gains or losses separately, so that आपका P&L volatile ना हो. अगर आप उठा के हर साल changes in revaluation surplus को P&L में डालेंगे, then your P&L will be very volatile and it will show changes which are not driven by the operations of the company. Right, that is why those items have been kept separately and are shown as a separate section in statement of profit and loss. I hope this is understood. Now we have covered that it includes profit or loss and OCI, obligatory line items on the face of profit and loss. So what are the obligatory line items or the minimum line items? Of course, the revenue, finance cost, impairment losses, share of profit and loss of associate JV, tax expense, discontinued operations, the profit or loss, gains and losses arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost. No extraordinary items. So पहले जैसे कि extraordinary items के लिए एक separate line item होता था in the P&L, that has been deleted. You cannot show any extraordinary item. Right. So these are primarily the minimum requirements of P&L. Now, when we show the expenses in Ind AS, we show the expenses on the basis of nature, right? For example, employee benefit expenses है, या depreciation and amortization है, या फिर purchase of inventory है, right? Other assets है, finance cost है. So this is the nature of expense, right? But since Alok sir ने आपको बताया that Ind AS are converged with IFRS, and there are some carve-ins and carve-outs. There are some differences between Ind AS and IFRS. So Ind AS says that you can show the expenses only by nature, right? And IFRS also says that, but IFRS also says that you can also show the expenses by function. That means administrative expenses alag se, selling and distribution alag se, right? Marketing alag se. So this is the classification by function, but Ind AS बोलता है no, you can only do the classification of expenses on the basis of nature. So this is a primary difference between Ind AS and IFRS. Just quick questions. Where OCI will be reflected in financials. So as I have already explained, OCI is shown as a separate section below the statement of profit and loss, and it is a part of other equity. So it will be shown in the statement of changes in equity also. Then, so where extraordinary items will show as per Ind AS, so it will be dependent upon the nature of expense, or उसी nature of expense में वो club हो जाएगा. Now moving on to statement of changes in equity, I've already explained that this is a separate component of the financial statements, right? And on the face, there is a reconciliation of equity between the carrying amount at the beginning and at end, right? So क्या-क्या दिखाया जाता है? Profit and loss for the period की movement, OCI की movement, any retrospective application or restatement, right? So all these are shown in SOKI. Also in statement or in notes, capital transactions with owners, movements in accumulated profits, movements in capital and reserves. So all these movements which are part of other equity is shown in the statement of changes in equity. Now cash flow statement. This is a very interesting statement. Personally, I like this statement a lot. इसमें क्या होता है? This statement, the format is not given in Schedule 3. Format is not there in Schedule 3. Format कहाँ है? Format है Ind AS 7 में. Ind AS 7 on the cash flow statement, there are two types. There are two methods basis which you can prepare the cash flow statement. First is the direct method, and second is the indirect method. Right? Mostly we follow indirect method. That's fine. So कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको Ind AS 7 में मिलेगा, उसकी सारी की सारी गाइडेंस आपको Ind AS 7 में मिलेगी. ये स्टैंडर्ड कुछ नहीं बताता, ये स्टैंडर्ड सिर्फ इतना बोलता है that cash flow statement is a component of
financial statement. That's all. Right? Baki puri guidance, whatever you need to know about cash flow statement will be there in Ind AS 7. So primarily, cash flow statement shows a movement of cash and cash equivalents. उसमें होता क्या क्या है? I'll just explain a little bit. Cash in hand आता है, cash on deposit, short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash which are subject to insignificant risk of changes in value. मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं? या तो कैश आपके हाथ में रखा है, या तो कैश आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, या फिर आपने कुछ मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करी है विच आर हाईली लिक्विड, राइट? या तो मतलब देयर इज इनसिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द वैल्यू, कोई रिस्क नहीं है, राइट? आपने हाईली लिक्विड बॉन्ड्स खरीद रखे हैं जिनकी टर्म भी 3 months है, राइट? सो all these items will be a part of cash and cash equivalents. Right, so the cash flow statement basically is divided into 3 types of activities: operating activities, which is nothing but the revenue generating activity; investing activities, which is primarily regarding the long term assets and investments of the company, right? तो जो भी cash flow आपका long term assets में लग रहा है या फिर investments में लग रहा है, that is covered in the investing activity. And financing activity, which is nothing but the composition of equity and debt, right? तो आपका जो भी equity में movement हो रहा है या borrowings में movement हो रहा है या any other debt में movement हो रहा है, that will be shown in the financing activities. Yes, so this we have already discussed that notes में क्या क्या आएगा. Notes will give you the information about the basis of preparation. आपको बताना है जब आप notes लिखना शुरू करोगे, आपको company का नाम, उसका थोड़ा सा background, currency, right, level of rounding, फिर आपको लिखना है basis of preparation कि आपने कौन सा gap follow किया है. In that you have to mention that you have followed Ind AS, then you have to give a unreserved and explicit statement of compliance, and then you have to give the accounting policies disclosures. आपको सारी accounting policies उसमें दिखानी है, जितने भी items आपके balance sheet में P&L में हैं. You have to show all the accounting policies that you have followed, and then there will be explanatory notes कि हर एक line item का balance sheet या P&L में there is a specific note and a reference has been given in the statement and in the note. Right, so this we have discussed: statement of compliance, summary of significant accounting policies, supporting information for items presented in financial statement in order in which each statement and each line item is presented. So basically for each item in the balance sheet and P&L you have to give a note, and then other disclosures including contingent liabilities, unrecognized contractual commitments. So other non-financial disclosures. So Alok sir has also explained that the with the introduction of Ind AS, there has been extensive disclosure requirements, right? Extensive. पहले जो financial statements say 50 pages के बनते थे, वो 150 pages के बनते हैं. क्यों? क्योंकि disclosures इतने ज़्यादा हैं. जितना आपका risk है, उसके ऊपर इतने disclosures हैं. There are 2 standards in complete Ind AS which are only on disclosures: Ind AS 112 and Ind AS 107. So these 2 standards give you nothing but the disclosure requirements. So there are so many disclosures that you have to give in Ind AS financial statements. Then, as Alok sir has also explained, that you have to disclose the judgments and estimates that you have applied, right? जैसे कि useful life of PPE, अगर आपके PPE है तो उसकी useful life क्या है, उसका note आपको देना पड़ेगा, right? Impairment of goodwill. So all these disclosures are also required. Sorry. So this was all about Ind AS 1. Now we have 20 minutes left and we have Ind AS 10 to discuss. So I'll just move on, and if you have any queries, you can just keep posting and then we'll discuss at the end of the session. Right. So this standard is all about events after the reporting date. Events after the reporting date क्या होता है? Reporting date is first of all the end of reporting period,
राइट जब आप बैलेंस शीट या पीएनएल प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मोस्टली दैट इज 31st March of the year, राइट. बट इट कैन बी ऑल्सो इंटरिम, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं, राइट. सो से 30th June के फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इन दैट केस 30th June इज द रिपोर्टिंग डेट, राइट. सो अब इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दैट मीन्स 31st March या 30th June के बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, कब तक, टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अप्रूवल कहाँ होते हैं, कौन करता है, कंपनीज के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जब तक वो अप्रूव नहीं होते उस डेट तक जितने भी इवेंट्स होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, whether we have to consider them in the financial statements or not, that is the question in this standard, and the answers to this question will be given in this standard, right. So I've already explained the objective, right. So by definition, if we go, I've already explained the events after reporting period are those events, it may be favorable or it may be non-favorable, right, unfavorable, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, that occur between the end of the reporting period, means say 31st March 2021 and the date when the financial statements are approved by the board of directors, say 15 June 2021, in case of a company and by the corresponding approving authority in case of any other entity, right. तो कोई और entity है तो जो भी approving authority होगा उसकी approval date के बीच के जितने भी events होते हैं, favorable or unfavorable, those are called the events after the reporting date. So here's an example to it, जैसे कि 31st March 2021 and 15th May 2021 is the approval date. तो इसके बीच के जितने भी events होंगे, favorable or unfavorable, those will be studied by this standard. अब ये events किस किस तरीके के हो सकते हैं? There can be two types of events. First is the adjusting events. Adjusting events का मतलब क्या होता है? ये वो events होते हैं जो 31st March 2021 को condition exist करती थी, right? मतलब कि 31st March 2021 के जब आप फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे थे, दैट टाइम दैट इवेंट वाज समहाउ देयर, राइट. बट उसके बाद में वो इवेंट कंफर्म हो गया किसी तरीके से, आपको वैल्यू कंफर्म हो गई या उसकी अकरेंस कंफर्म हो गई. बट ऑन 31st March यू न्यू देयर वाज द इवेंट, राइट, देयर वाज दैट कंडीशन, 31st March को आपको पता था. सो दोज आर एडजस्टिंग इवेंट्स. इसमें क्या होता है, उस इवेंट की जो भी इंप्लीकेशन है यू हैव टू कंसिडर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपको अपने नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे, अमाउंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट. दूसरे इवेंट्स क्या होते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. व्हाट आर दीज इवेंट्स? दीज आर द इवेंट्स व्हिच अराइज आफ्टर द 31st March 2021. मतलब 31st March को हमें पता ही नहीं था कि बाद में ऐसा हो जाएगा. आग लग गई कंपनी की फैक्ट्री में, राइट, अर्थक्वेक आ गया. So these are non-adjusting events because those conditions did not exist as on 31st March 2021, right? हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. तो इस केस में क्या होगा, एडजस्टिंग इवेंट के केस में तो आपको अमाउंट्स एडजस्ट करने पड़ते हैं. नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के केस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है इन द अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट, जैसे कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में. डायरेक्टर that was my bad. डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता था इन केस ऑफ AS. Ind AS में आपको नोट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है ऑफ द नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन AS एंड Ind AS ऑन दिस पार्ट, अदरवाइज मोर और लेस दीज स्टैंडर्ड्स आर सेम. ठीक है. सो दिस पॉइंट यू हैव टू नोट दैट नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, AS के केस में डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर जाता था, बट नॉन एडजस्टिंग इवेंट Ind AS के केस में नोट्स में डिस्क्लोजर जाएगा, यानी कि इट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. सो दिस इज प्राइमरीली व्हाट द स्टैंडर्ड सेज. इसके आगे सिर्फ एक्सप्लेनेशंस हैं, सो आई जस्ट गो थ्रू इट. ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात करता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर Q1 के फाइनेंशियल्स प्रिपेयर हो रहे हैं, राइट, so the reporting date is 30th June 2021 and say 15 जुलाई को अप्रूव होने हैं, तो between 30 June and 15 July whatever the events would be there, those will be considered as events after the reporting period.
Now, these two types we have already discussed. Now let's understand what are the examples of adjusting events and non-adjusting events. For example, settlement after the reporting period of a court case that confirms that the entity had a present obligation at the end of the reporting period. इसका मतलब ये है कि 31st March 2021 को आपको पता था that a case is going on. ठीक है, there was a present obligation that आपको amount confirm नहीं थी, right? But then after the reporting date, the court case gets settled और आपको amount भी confirm हो गई. In that case, what you have to do, you'll have to make a provision, right? You'll have to make a provision, you have to recognize a liability in the books. तो वो adjusting event है, that is an adjusting event because 31st March को वो court case exist करता था, उसके बाद वो settle हो गया, that just confirms your liability, right? So you have to adjust your financial statements for that particular settlement. Another example could be the receipt of information after the reporting period indicating that an asset was impaired at the end of the reporting period or that the amount of a previously recognized impairment loss for that asset needs to be adjusted. For example, classic example is bankruptcy of customer. आपने trade receivable recognize कर रखा है on 31st December. Right, and you had made provisions. Yeah, you did not make any provision, but the customers, the recovery was bleak, right? And then after the reporting period, the customer gets bankrupted. In that case, what happens? या तो कुछ recoverability है तो आप provision बनाओगे, right? अगर recoverability नहीं है, zero recoverability expected है, तो आप उसको 100% provision बनाओगे. Right, so in that case also आपको अपने accounts को adjust करना पड़ेगा. The amounts will have to be adjusted and additional provision will be required in the books of accounts. मतलब कि एक loss allowance create करना पड़ेगा, right? The determination after the reporting period of a cost of asset purchased or the proceeds from assets sold before the end of the reporting period, right? For example, inventory is measured at lower of cost or NRV, right? Now, as on 31st March, say the cost was lower, but after 31st March, COVID आ गया, right? COVID आ गया, inventory की value बहुत कम हो गई. Now the NRV is lower than the cost. क्या होगा? Now COVID आया, 31st March को क्या पता था कि COVID आएगा? 31st March को पता था कि COVID आएगा, right? तो जब 31st March को हम assessment कर रहे थे, तब NRV कम नहीं थी, but after 31st March NRV confirm हो गई कि वो कम हो गई है. That you will have to adjust in the financials. But अगर 31st March को हमें नहीं पता होता कि COVID आएगा, in that case हमको ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है एंड हमको एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? सो कंफर्मेशन ऑफ द परचेज प्राइस और द प्रोसीड्स, दैट इज आल्सो an adjusting event. The determination after the reporting period of the amount of profit sharing or bonus payments if the entity had a present legal or constructive obligation at the end of the reporting period. So आपको bonus payments करने थे and at the end of reporting period यानी कि 31st March को you had that obligation that you have to make a bonus payment, but the amount was not sure, right? And after the reporting period the amount got short, then in that case you will have to recognize a liability at that amount. So आपको अपने accounts को adjust करना पड़ेगा. Discovery of fraud or error that show that the financial statements are incorrect. This is a very important point. So fraud or error हुआ है after the reporting period, that could not be known as on 31st March, right? तो by nature, by definition ये तो adjusting event नहीं होना चाहिए. Why? Because 31st March को मुझे थोड़ी पता था कि fraud होगा, right? वो तो बाद में पता चला. But
This is an exception कि अगर fraud या error पता चलता है after the reporting period, you anyway have to adjust your amounts. You have to adjust the financial statements. चाहे वो आपको बाद में पता चले. So these are certain examples of adjusting events. Now we can go ahead and discuss the examples of non-adjusting events. So non-adjusting events क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि major business combination after the reporting period or disposing of a major subsidiary. आप एक company acquire करने लगे after the 31st March, right? So 31st March को नहीं पता था कि आप बाद में एक business combination में जाने वाले हैं, right? So that is a non-adjusting event. Announcing a plan to discontinue an operation. इस तरीके की announcement कुछ होती है and 31st March को उसका clue भी नहीं था. So you cannot adjust the numbers. That will be a non-adjusting event. You have to make a disclosure in the notes of financial statement. Destruction of a major production plant by a fire. Fire, आग लग गई. Right? That is a non-adjusting event. Abnormally large changes after the reporting period in asset prices or foreign exchange rates. Foreign exchange rates में कोई movement आता है after the reporting period. That is not an adjusting event. Changes in tax rates or tax laws enacted or announced after the reporting period that have a significant effect on current and deferred tax assets. So अगर enactment ही बाद में हुआ है, announcement ही बाद में हुआ है, so that is a non-adjusting event, right? You didn't know on 31st March कि ऐसा tax rates में change आएगा. Commencing major litigation arising solely out of events that occurred after the reporting period. After 31st March के बाद ही कोई litigation शुरू हुआ. Though that is also a non-adjusting event. Major purchase of assets, classification of assets as held for sale. So all these transactions which are happening after 31st March, right, which were not, 31st March ko you didn't have any clue about that event. So that all these events would be non-adjusting events. You don't have to adjust those in the financial statements. You don't have to change the amounts in the financial statements. You have to make a disclosure in the notes to financial statements. Now there are certain special events which are discussed in this standard, right? So let's go one by one. For example, dividend. Now, dividend is recognized when it is declared, right? Now, if it is declared before the end of the reporting period, you recognize in the financial statements. But if it is declared after the reporting period, on 31st March, you knew that this much dividend will be declared, right? And it is declared after the reporting period. Then whether it's an adjusting event, no. It's not an adjusting event. Dividend की liability तभी बनेगी जब वो declare हो चुका है. राइट तो अगर 2021 का डिविडेंड डिक्लेयर होता है 30th June 21 को, so that will be recognized in the financial statements of 21-22, not 2021, right? For 2021 you will have to give a disclosure in the financial statements. This dividend declaration is a non-adjusting event. If it is happening before the end of reporting period, then you will have to recognize in the financial statements. But if it is happening after the end of the reporting period, you will have to give a disclosure in the financial statements of current period, and you will have to recognize in the financial statements of the subsequent period, right? Then going concern, this is very, very important. So going concern assumption is basically going concern is an assumption while preparing the financial statements. ये assumption होती है कि company अगले 12 महीने तक liquidate नहीं करेगी या business cease नहीं करेगी, right? The company will go on forever, right? At least for a foreseeable future, मतलब कि 12 महीने तक तो चलेगी. Now, if there is any doubt in the going concern assumption, that means if the company or the management considers that going concern assumption is not appropriate, then what happens? Now, these cases have arise after the reporting period, right? Company को liquidate करना है, that situation was not existent on 31st March. That has arose after the
31st March, then what happens? In that case, it is an adjusting event. Even if it does not pertain to the conditions on the reporting date, going concern is such a sensitive matter that even if it is, even if it was not there on 31st March, you will have to adjust your numbers. You will have to show your numbers on basis other than a going concern. राइट फॉर एग्जाम्पल एसेट्स को आप एनआरवी पे दिखाओगे, लाइबिलिटीज को आप लिक्विडेटिंग अमाउंट्स पे दिखाओगे. सो you will have to adjust your financial statements. You cannot show your financial statements on going concern basis, right? So these were some certain specific items. Now these are the disclosure requirements. So this standard says that you have to disclose the date of approval for issue in the financial statements. If an entity receives information after the reporting period about the conditions that existed at the end of the reporting period, it shall update the disclosures that relate to those conditions. So disclosures आपको देने पड़ेंगे, right? For non-adjusting events, what are the disclosures required? The nature of the event. आग लग गई तो आग लग गई, आपको ये बताना है अपने financials में, और estimate देना है of the financial effect. राइट कि आप कितना नुकसान हुआ है उसका आपको एक एस्टिमेट देना पड़ेगा. अगर आप एस्टिमेट नहीं दे सकते हो तो आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू एस्टिमेट एनी फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दिस फायर. Right, so these are the primary disclosures that are required, and this is what the standard says. So even if you have completed working on your financial statements for the year end, you will still have to keep monitoring the events that are happening after the reporting date. The management will have to analyze all the situations and events that are happening after the reporting date to determine whether it's an adjusting event or a non-adjusting event, at least till the date of approval of the financial statements. Right, so this was from my side. I can see certain questions. If company prefers appeal, in example given of court case, whether adjusting or non-adjusting. So that completely depends. If the appeal has been done by the company, right, that means the amount is still not confirmed. So it can be a non-adjusting. If customer has insolvent after the balance sheet date, so whether it is adjusting or non-adjusting. If the customer becomes insolvent after the balance sheet date, it's an adjusting event. Current or non-current status of fixed deposits is determined from original date of maturity or maturity from the reporting date. So basically, fixed deposits ki agar original date of maturity is less than 3 months, then it is shown as a part of cash and cash equivalents, right? If it's if the original maturity is more than 3 months, but reporting date say within 12 months hai, that is shown in other cash balances, right? And but if it is going beyond 12 months from the reporting date, then it will be shown in non-current assets. All right, any other doubt we can take up? Otherwise, we'll just conclude the session. Someone is sharing screen, I think. I think, are there any more queries? Thank you, Chandni ji, for giving a wonderful session. It was a very enriching and enlightening topic, and your coverage was also very, very comfortable and very knowledgeable. Thank you so much, ma'am. Thank you. And here I share with you the certificate of participation. Thank you so much. Thank you. Thank you for sparing the time and valuable time and listening to all the queries and concerns of the participants also. Thank you. Thank you, Chandni, for your wonderful session, and I hope you will deliver one more session. So if you have any query, participant can ask
and interact one more time with you. So thank you very much, Yes. and thank you to all participants for wonderful session. One information that day one recording and presentation will be shared by tomorrow morning, as many members are asking. So thank you, Poonamji, for coordinating today's session, and entire series will be taken care by Poonam Singhal ji. And thank you, Chandni ji. Thank you to each one of you. I request admin to please conclude the meeting. Thank you, Gurpreet ji. Thank you so much, sir. Thanks to Team CASA and thanks to all the participants for careful listening. If you have any doubts, I'll be there in one more session on Ind AS 116. We can discuss. Otherwise, you can connect with me or you can connect with Sumit sir, and then we'll try to resolve your query. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Prashant, please close the meeting. In the meantime, we can leave the meeting.